Hello and welcome back to our channel everyone. Today we will discuss all the previous year questions of All India Bar Examination क्योंकि अगर आपको ये previous year questions आते होंगे तो फिर आप आराम से पास हो जाएंगे क्योंकि हर साल काफ़ी questions directly या indirectly repeat होते ही हैं, इसलिए ये questions तो आपको पता होने ही चाहिए। लेकिन MCQs बहुत हैं और उन्हें देखने में टाइम भी बहुत लगता है, इसलिए हम यहाँ उन्हीं MCQs को वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आपका समय भी बचे और याद करना भी आसान हो। इस सीरीज में हम एक एक करके सिलेबस के सभी सब्जेक्ट्स के वन लाइनर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के अब तक के ऑल इंडिया बार एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इन कंपनी लॉ इज अ वन पर्सन कंपनी विल मैंडेटरीली गेट कन्वर्टेड इनटू ईदर अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी इफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ वन पर्सन कंपनी एक्सीड्स ₹50 lakhs। एक वन पर्सन कंपनी मैंडेटरली प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बना दी जाएगी अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा हो। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट इज 3. ABC Private Limited Company can convert itself into a public company by passing a special resolution। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकती है by passing a special resolution। Next is section 8 of the Companies Act contains provisions relating to formation of companies with a charitable objective। The verification of the registered office shall be furnished to the registrar within 30 days of the incorporation। The minimum number of directors in a public company is 3. An associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence but which is not a subsidiary। Keep in mind, not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। associate company एक दूसरी कंपनी की वैसी कंपनी होगी जिसपे वो दूसरी कंपनी इन्फ्लुएंस एंजॉय करती हो, और ये भी जरूरी है कि वो उसकी सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए। एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर कंपनी। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ NCLT। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस डील विद द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। अ प्रोस्पेक्टस विदाउट कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जिसके अंदर कंप्लीट पर्टिकुलर्स ना हो क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज के, उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैरी फॉरवर्ड एरियर्स ऑफ डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर्स। आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। जो भी आर्टिकल्स है कंपनी के उनको ऑल्टर किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के द्वारा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अंडर द कंपनीज एक्ट एवरी पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी मस्ट एटलीस्ट टेक वन शेयर। हर पर्सन जो कि मेमोरेंडम ऑफ कंपनी को सब्सक्राइब करता है उसको एटलीस्ट एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम 7 लोगों की जरूरत है। अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस एज सून एज इट रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही एक प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, इट कैन कमेंस बिजनेस। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज 7। मिनिमम 7 लोग चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। नाउ देयर इज अ पर्सन ए एंड इट डज नॉट फॉल अंडर द क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर एक पर्सन है ए और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी भी क्लॉज में नहीं कवर होता है, इसका मतलब है कि जो ए पर्सन है ही और शी इज अ डायरेक्टर। द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस टेक्स अप केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन रेफर्ड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO सिर्फ उन्हीं केसेस को देखेगा जो कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेफर किए जाएं। कंपनीज एक्ट 1956 डज नॉट अप्लाई to trade unions registered under the Trade Unions Act of 1926। Companies Act ट्रेड यूनियंस जो
कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर रजिस्टर्ड है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। द नेटवर्थ ऑफ अ फॉरेन कंपनी फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 एंड सेक्शन 381 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 4 सब क्लॉज 5 of the Companies Act 2013 can take action for striking of the name of the company from the register. रजिस्ट्रार जो है किसी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है रजिस्टर के अंदर से। Now companies with a net profit of 5 crores or a net worth of 500 crores and a turnover of 1000 crores or more must constitute a corporate social responsibility committee. An auditor under the Companies Act 2013 cannot provide internal audit, actuarial or managerial services. कोई भी auditor who comes under the Companies Act 2013 cannot provide any internal audit, actuarial or managerial services. Now provisions regarding corporate social responsibility are incorporated under the Companies Act 2013 under section 135. The project based protection of a national heritage is considered corporate social responsibility. Any project based protection national heritage is considered corporate social responsibility. The Companies Act of 1956 accords recognition only to an accounting standards, whereas under section 27 of the Companies Act 2013 the recognition is accorded to both accounting and auditing standards. Companies Act 1956 के अंदर सिर्फ accounting standards की बात की गई थी, लेकिन section 2 subsection 7 of Companies Act 2013 के अंदर accounting और auditing standard दोनों की बात है। याद रखना है 56 में सिर्फ accounting standards थे, 2013 के एक्ट में accounting और auditing standards दोनों थे। Companies Act 2013 allows for the formation of one person company also. Section 26 of the Companies Act requires disclosures in the prospectus of names and addresses of the CFO about sources of promoters contribution among other things. Section 253 of the Companies Act deals with determination of sickness. Under Companies Act 2013 any company having a net worth of rupees 500 crores or more or a turnover of rupees 1000 crore or more or a net profit of rupees 5 crore or more should mandatorily spend 2% of their net profits per fiscal on corporate social responsibility activities. किसी भी कंपनी का अगर नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसे अपने 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स को हर साल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज में लगाना होगा। द 2013 कंपनीज एक्ट हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम 50 to 200. द standards of auditing have been accorded legal sanctity in the 2013 Act and would be subject to notification by the NFRA. Section 63 of the Companies Act discusses the issue of bonus shares out of its free reserves or the securities premium account or the capital redemption reserve account subject to the compliance with certain conditions such as authorization by the articles, approval in the general meeting. The quorum of meeting is not present is a ground recognized under Companies Act for automatic adjournment of general meeting. अगर कोई quorum है meeting के लिए and it is not present, then it is a ground for automatic adjournment of general meeting. An extraordinary general meeting can be called by members. The power to appoint an additional director can be exercised by the board of directors without holding a meeting. Additional directors को board of directors appoint कर सकते हैं बिना किसी meeting को बुलाए. Loss of substantum is not a ground for compulsory winding up of the company. याद रखना है, it is not a ground. The petition for winding up of the company is liable to be dismissed if trading activities of a company was stopped temporarily in view of trade depression with an intention to continue the same when conditions improve. कोई भी पिटिशन अगर वाइंडिंग अप के लिए फाइल की गई है किसी पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट, तो उसको टेम्पररी स्टॉप कर दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड डिप्रेशन जैसी कोई सिचुएशन हो तो. अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज इन नेशनल इंटरेस्ट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 396 ऑफ द कंपनीज एक्ट. अंडर सेक्शन 171 ऑफ द कंपनीज एक्ट अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी में बी कॉल्ड बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग. नोटिस इन राइटिंग देना होगा फॉर नॉट लेस देन 21 days. A private limited company limits the number of members to 50. So with this we have done all the questions of company law that have ever come in all India bar examinations. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.